Namaste ji, namaste. So 1 year ago, I made a video titled "So You Think You'll Immediately Earn a Lot After Doing Your LLB," and I got abused a lot, and there were a lot of personal remarks as well. Anyway, why I've told you that, I'll just get back to the video. I'll make a reference again to it. What you can do after your LLB, and let us consider law as a career. अब LLB करने के बाद आप क्या करेंगे? मान लेते हैं कि LLB हो जाती है. You can take the CLAT LLM and take up a job in a PSU because वो लोग criterion देखते हैं कि CLAT LLM में आपका score क्या है. You can become a legal journalist. So quite a lot of people, if you go to Twitter and you go to any news publications, you will find a dedicated legal reporting department. So those people report from the courts. So they're not practicing lawyers. They don't know much about practical aspects of law, but they're reporting judgments, which is fair enough. And these days, it's a requirement. So legal journalism आप एक देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास law की knowledge होगी, so obviously then only will you be able to understand what the judge साहब is saying. You can always go into litigation. You can always join a corporate law firm, or you can pursue a LLM, take your UGC net, and become a professor. There is a huge shortage of professors of law, good professors of law. And then you can basically do legal advisory. I just forgot what did I mean by LA. Legal advisory अलग अलग companies को legal advice चाहिए तो आप वो दे सकते हैं, provided that you get through. You can couple your LLB with a CS and become a full-fledged corporate lawyer, and I've already done a video on CS coupled with LLB. You can look it up in the TLOItalks series. You can obviously go on to become a judge, which is the most prestigious post as far as I know. एंड देन यू कैन परस्यू. अच्छा, यूपीएससी वाले देने वालों को एक एडवांटेज हो जाती है कि आपका लॉ ऑप्शनल पूरा निपट जाता है, आपकी पॉलिटी काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है यहाँ से. जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों को एक एडवांटेज मिलती है, लॉ में आपको दोनों एडवांटेजेस मिल जाते हैं कि आपका एक ऑप्शन हो तो काम उसका समाप्त हो जाता है. नाउ आई डिस्कस दिस अगेन, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस गो इनटू द मनी पोर्शन. If you think that you are going to immediately, the keyword is immediately, and that's why I referred to that video पहले में कि immediately अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए कि आपको पैकेज एक, तो आप वो BCom और MBA वाला कॉम्बिनेशन ले लीजिए. 12th में अच्छे नंबर लाइए, go to let us say a place such as SRCC, and then MBA आप किसी IIM या ISB वगैरह से कर लीजिए. You'll get a much better deal right after college, because keyword is immediately. If you're short on funds and you need money coming into your house at a very rapid pace, this pretty much in fact in our country is the best option. But यहाँ पे वकालत में immediately पैसे नहीं मिलते. उसका कारण क्या है आप खुद सोचिए. Let us say that there is a 25-year-old surgeon or whatever, there's a doctor, there's a very young doctor. Do you go to him and let us say that your father has some kidney problem or something and you want to get a surgery done? You'll just look at him कि यार ये तो अभी बहुत छोटा है, how can I trust him with all of this? मतलब this is a complicated procedure. Same thing with law. So as soon as you come out of law college, you'll be pretty much very, very young and getting work in litigation. In litigation then becomes a challenge for people to trust you. और ये कबीर सिंह मत बताइएगा, कबीर सिंह तो पिक्चर थी, उसके पास तो प्रीति भी थी. अब आपके पास तो आई थिंक प्रीति भी नहीं होने वाली, जिसके पीछे आप शराब पी पी के पागल हो जाएंगे. लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है, अगर आप ये कर सकते हैं रीड राइट एंड स्टडी, इमीडिएटली पैसा नहीं मिलता. लिटिगेशन में यूजली 20-1,000 रुपये, 15 से 20,000 रुपये मिलते हैं. एंड दो सैलरीज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको ख्वाब दिखाते हैं, दे आर गिवन. ऐसी बात नहीं है कि उनको वो वाली सैलरीज अवेलेबल नहीं है मार्केट में. दे आर गिवन लाइक फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ द टॉपर्स ऑफ NLS, मतलब उसके अंदर से NLS जो गए उसके भी 10 से 20% वालों को ही वैसी वाली सैलरी मिलती है, जिस सैलरी के चक्कर में बाई चांस अगर आप क्लैट दे रहे हैं, यू आर इन 12th एंड वंडरिंग वेदर यू वांट टू टेक लॉ एज अ प्रोफेशन और नॉट, डोंट गो इन dreaming about those salaries, because they are reserved for a very few people. And if you can become one of those few people, like getting a really high rank in CLAT and then getting a really high score in the college as well, well, things can work out for you as well. तो यहाँ पे जब आपकी थोड़ी सी एज हो जाती है तो एक कहावत है इनफैक्ट, जब बाल सफ़ेद और बाल उड़ जाएं, जैसे मेरे तो उड़ भी चुके हैं बट थोड़े शायद अभी पूरे सफ़ेद नहीं हुए, then the scope of earning in lawyering is limitless. क्योंकि कई हाई कोर्ट या कई सुप्रीम कोर्ट के वकील 3 से 5 लाख रुपए दिन का भी कमा लेते हैं. ऐसी कोई मतलब हैरानी वाली बात है नहीं, because the amount of work that they have. But for that the clients have to trust you. And how will they trust you?
with experience, because you remember you are in a practice based profession. We'll just come to the badge of honor bit because I've discussed this in the previous video as well. Practice basically आपसे पूछी जाएगी, अच्छा वकील साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो वकील साहब हाँ जी मैं कितने साल से? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम. अगर आप मतलब जब आप 5+ साल वाले वकील हो जाएंगे ना तो लोग थोड़ी सी इज्जत से देखेंगे कि हाँ इसको कुछ पता है. अभी जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ अभी 3 ही महीने हुए, अच्छा अच्छा ठीक है चलो कोई काम होगा आपको बता देंगे. देखिए जब आप 12th से निकले थे 12 साल लग गए आपको स्कूल टापने, तो लॉ का भी आप समझ लीजिए स्कूल रफली उतने ही साल का है. आफ्टर दिस इज अ PQE, post qualification experience, because this is a technical profession. You are practicing, you are applying something. Even let us say that you get a really high salary, you are this 10% of analyst nalsa or whatever, you get a really high salary, you will still have to learn a lot and then go to those partner levels that people think will be available immediately to you. Sorry, not happening in law. I'll be very blunt and crude, not happening. But let us say now when you are letting go of something, then obviously you will get something back, because remember there's a price to pay for everything. You will get a badge of honor. जब आप SRCC या किसी बेसिकली BCom MBA वगैरह कोई भी दूसरा प्रोफेशन पकड़ लीजिए, एक्सेप्ट फॉर दीज डॉक्टर, UPSC, पुलिस एंड लॉयर एंड CNCS, because CNCS हमारे भाई बंधु हैं. You become a vakil, you basically let go of your former identity and you are above the society. That is what you get for pursuing this and letting go of the money factor. आपको हमेशा वकील साहब ही कह के रेफर किया जाएगा, एंड आई विल एलैबोरेटेड दिस इन अ फॉर्मर वीडियो. तो ये सोसाइटी वाले, तो ये जो सोसाइटी में जो आम जनता है, आई मेड द स्टार्स, दीस आर नॉट क्रॉसेस, दे आर नॉट ऑल डेड, दे लुक अप टू यू. अच्छा वो लड़का इज लॉयर, या वो लड़की शी इज लॉयर. यू नो वेदर यू आर मेकिंग 0 per month does not matter to them. लॉयर ज्ञान वाली चीज है. सो इट्स बेसिकली प्रैक्टिस. अच्छा, और लास्ट में टू द यंग गाइज टू who are pursuing CLAT and are in your 12th standard and have huge dreams about Boston Legal or Suits or whatever, read, write and study into infinity is basically, technically speaking, law. There will not be a single day where you are not studying, there will not be a single day where you are not writing, there will not be a single day where you are not reading. So ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपका लॉ कॉलेज खत्म और आपको सब कुछ सदा के लिए याद रहेगा. आप सब भूल जाएंगे, को कुछ याद नहीं रहेगा ये सब. जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे हर रोज़ ये इस सब पढ़ाने से पहले मुझे पढ़ना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिमाग में सब कुछ याद रहता है, बिकॉज इतनी सारी एक्ट्स हैं, इतना सब कुछ है. अब सिंस आई एम इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, सो आई से दीज थिंग्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. सो आई कीप सेइंग 142, 141, 137, 136. सो आई नो ऑल ऑफ दिस बैक इन द बैक ऑफ माई हेड. तो ऐसे ही बेसिकली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन डेली, ऑन अ डेली बेसिस. सो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन, तो जब ये प्रैक्टिस बंद हो जाती है तो थोड़ी सी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती है दिमाग से. नाउ दिस वाज द पॉइंट दैट आई मेड इन दैट वीडियो, बट प्रॉब्ली आई डिडंट से इट एक्सप्लिसिटली. सो क्वाइट लॉट ऑफ पीपल अब्यूज, ये क्या बकवास है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं. ये सच है, ये सच है. वेदर वन लाइक्स इट, वेदर डज नॉट, वन डज नॉट लाइक इट. एंड व्हाई डू आई से दिस? Because many young lawyers right after graduation, they get the shock of their life. They're not going to immediately earn a massive amount of money like they had thought, and then they quit the profession. तो इसीलिए not quitting the profession, अगर आपके पास ये पहले से ही पता होगा, when you are very well prepared for all of this, तो आप quit ही नहीं करेंगे. And that is what I want. I would want to see more and more good lawyers joining the profession and giving something back to it. After all, 5 साल या 3 साल आप लगा कर आए LLB करने में, और ये वाले सारे आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. बताइए इन सब के बाद ये सब कुछ अवेलेबल है क्या आपके पास? नहीं, सिर्फ नौकरी करो, वही एक्सेल पे जिंदगी, वही कॉपी कट कॉपी पेस्ट पावर पॉइंट बनाओ, वही सी एक 10 स्लाइड की पावर पॉइंट के बारे में 50-50 मिनट बोलते रहो. यही होता ना. Can I be refute me? I don't think so, because I've worked in that sector as well. Anyway, so hopefully law as a career, the scope of law as a career is clear to you, and hopefully there's a smile on your face now. Again, why I'm telling all of this is so that you don't end up quitting and there is no demoralization, because this happens a lot. A lot of people don't end up practicing law because they get the shock of their lifetime right after graduation. And I don't want you to get that. Okay, ji? Do take very good care of yourself. May God bless you. Yeah, and if you like all of this, then consider supporting the channel. Because otherwise,
we only keep on focusing on the coaching bit, which is gets a bit boring as well. ठीक है जी, take care, bye bye.